Namaskar, adab, sat shri akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. You are staying safe and you're staying healthy. Another quick session today or tonight. जैसे कि मैंने कहा, ये commitment था for the 14 days that will compromise your personal identity. Please take care. Thank you, Aviator 99. आप जो भी कह रहे हैं, that is always appreciated. Anybody should not be sharing any personal information. Anyway, sorry, got distracted. So yes, जैसे कि मैंने कहा, commitment made for this movement around Sushant कि 14 दिन के लिए, even though life can be very, very, very hectic. It is actually, and personal level पे भी I had this commitment. 14 दिन के लिए हम रोज आएंगे, and we will do these 45 minutes to 1 hour sessions, very focused, to the point, and we'll obviously spread the word around 14th June. Since how got to do part of the live session for the first time, you're doing a great job. Thank you, thank you, thank you. I see a lot of new names today, and I am really happy to see that. I am really blessed. I am really honored, and I know, as a matter of fact, I really want to thank each one of you, especially those people who have been sending me those DMs. मैं थोड़ा सा जरूर उसके ऊपर टच, I will touch upon that as well. क्योंकि आप लोग मुझे कह रहे हैं कि उसके बारे में, even though I don't want to, but I will touch upon a little bit at the very end of the session. क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग तो नहीं, वो एक दो हैंडल्स हैं आपको जो कांटेक्ट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, कुछ को व्हाट्सएप कर रहे हैं, एंड मेरे बारे में और मेरी से रिलेटेड कुछ एक दो लोगों के बारे में बातें बता रहे हैं और गड़े मुर्दे भी खाड़ रहे हैं, एंड उसके अलावा कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग आउट एंड टेलिंग मी, and it's a very deliberate choice right now that I have made. कि 14 दिन के लिए, I really want to focus just on Sushant, just on this particular activity that's happening in Delhi, Jantar Mantar. तो but end में आज मैं थोड़ा सा जरूर टच करूंगा. So for all those people, I will definitely. हेलो ABP जी, क्यों यार 14 दिन में इनका नाम लिए और इनको याद किए बगैर हम क्यों नहीं बेसिकली रह सकते. छोड़ो, वो जहाँ है, hope he's doing whatever he wants to do in his life, and let's keep him away from this movement. Yes, Aviator, thank you. प्रणाम आपको भी. बहुत सारी चीजें हैं जॉनी डेप के केस में, और बहुत सारी और चीजें अभी और निकल के आ रही हैं. मैं पढ़ रहा था, he might अभी तक कंफर्म नहीं है, but he might not even take the 10.9 million या जितने वो $1 million हैं from Amber Heard, just because he knows she cannot afford it. So that tells us the kind of a man Johnny Depp is. But we'll review it after 14th. We'll talk about that particular case. एक session करेंगे उसके बारे में. Hello Jill, hello. And अच्छा, ये तो मेरे ही लिखा था. Thank you Varuni. Please be aware, exactly. So take this as a serious thing. Do not share. सिमी जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा. I can't even tell you that I'm able to see you almost every day during these 14 days. I know you stand here for Sushant. You are only here for Sushant and Disha, and you have never ever shied away from saying few things around this movement, around people. I know there were some kind of confusions and some things that were put in your mind, but I know I have high regards, and that you are really here only and only for Sushant. और मैं सबको यही एग्जांपल देता हूँ, ऑफलाइन में भी कहता हूँ. I've seen as young as 4 and 5-year-old kids being part of this movement, and I've seen very senior people, and I have regards for everyone. And it shows in the kind of love and support and the adulation that you guys give on platforms and offline bhi. Agar hum baat kare na kare, it really doesn't matter. But end of the day, I know there are few people who will always be there
who will always be voicing for Sushant and Disha and anything that is wrong. So thank you so much. I really want to thank you for that. Hello, Gloria. Hello, Kamini ji. Another person who, no matter what, whatever time of the day or night, thank you so much, Kamini ji, and to everyone, Gloria, Poonam ji, Jill, thank you, and Charlotte. Thank you for that message again. Hey, RS, again, thank you so very much, RS, for always being there as well. Uh, and like I said, some new names as well. Hello, Shweta. I've been following your channel since the SSR for Justice. However, got the opportunity to be part of the live session for the first time. Thank you so much, Shweta. Ranjit ji, hope case is opened. And I know this is the sad part. People feel कुछ हो नहीं रहा, कोई अपडेट नहीं है, तो केस है भी कि केस बंद हो चुका है. Have the criminals been given the clean chit? Very sad to see such things. But we'll talk that about that as well. Namaskar, Kashmir ji. Jai Hind, Jai Bharat. Hope you're doing well as well. SSR Zindabad. Hello, Sonal again. Another person who I cannot thank enough, and thank you for always being there. So hello, everybody, or jitne bhi log, only God knows when. Sushant, Pranav. Yes, God definitely knows. Sushant also knows when he will get his justice, because he's the one who's fighting for his own justice right now. So don't worry. Hello, Paddy again. It's a long list now. इतने सारे लोग हैं जो who really care, who really matter to me as well. People who have really stood for Sushant, irrespective of how much time it has taken. So thank you once again, Paddy, for always being there. Hello, Shivai. Hello, Katie. Thank you once again. I am Ayush. Okay, Shivai Anderson. Yes, Ayush. पता लग गया आपकी फोटोग्राफ से मुझे. So मैंने देखा था. I think आपका पिछला आईडी somehow कुछ गड़बड़ हो गई है. So that's fine. Hello, Varun. I see so much public frustration. Even I am, but we need to understand that it's not easy to deal with a notorious cabal. We need to have patience and keep fighting. Absolutely, and thank you for being there since those early days. New Zealand personalized. Is there an official update? There is no official update. The last update was a response to one of the PILs filed, जहाँ पर कहा था the case is still sub judice, investigation is going on, and there is there cannot be any information shared outside of this. So unfortunately, this is where it stands. But fortunately, the family is not going to sit quiet. Family is, this guy has again started. And I am sorry, guys. I don't know what to do about these idiots. And I'm going to try to block them. But this is a big nuisance that has started happening of late. Okay. All right. We'll see. So yes, there is no official update and report. Yes, I have done that. I'm reporting them. So basically I remove them. I put user in timeout. I unhide unhide क्यों हो गया? Hide the user on the channel. So I have done all these, but they come up with some new IDs as well. So they are very idiotic and irritating. Anyway, so yes, so there is no official update. The family is now really ready to take it up, to the next level. Whenever it's the right time, they will take it up, and they will get some kind of update for all of us. So all we have to do is keep a little bit more patience, keep on supporting the family, because the family needs all our support. I've said this thousands and thousands of times. There are people who are attacking the family. They are attacking them for no reasons at all. They are attacking, or some of them are making sarcastic, or taking sarcastic digs at them. Some of them are taking very blunt pot shots at the family. They feel sisters were nowhere to be found. एक साल के लिए कहीं sisters थी नहीं. But unfortunately, they don't know, what the family's been doing and what they've been up to. So इन लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है. They are, useless waste people who have nothing else to do, just for a little bit of
views and subscribers, or just for a little bit of sensation, they can go to any levels, and they have stooped to very, very, dirty levels right now. So as warriors, I think, and as someone who we've really shown our love for Sushant, we should continue this support to the family. Yes, justice for Vijay Chittu as well. We will continue to talk about it. Yash, who is traveling right now, very soon he will be back with a bang. There is something that he's also planning. I'm really looking forward to that. And one thing which I have to say, and I would encourage all of you, as much as possible, while we pray for Sushant, we pray for Disha, we pray for the family, we pray for the sisters. I would encourage you all to also keep Yash also in your blessings. Uh, he is one person who might be facing the toughest of challenges in his life, but he will always have that smile. He will always keep us all entertained as well as charged up. But I would request you all to keep him in your prayers as well, and pray for his best. That he gets all the success in whatever he's planning, whatever he's doing. I'm sure the day is not far when we will see him shine like a very bright star. uh, and let's all make sure that we give him all our love and support. Don't tell him I did this, otherwise he will again, bash me. But let's all keep him in our prayers as well. He needs a lot of love and support and prayers right now. So that's all I want to say. So thank you, thank you, thank you. Now, आज का ये वाला सेशन, जैसे मैंने कहा, छोटा सेशन, but uh, again, I cannot thank Priyanka Di enough for such amazing taglines and all the different messages that she's conveying through her taglines. Today she said, SSR conspirators rewarded. It means a lot. If you read between that, it means a lot, which means some of the conspirators who have played an active role. Let's start with conspirator number one. We've done a session on her already, and we'll continue to talk about her. अगर हम रिया चक्रवर्ती की बात देखें, she has been one of the biggest conspirators, but the biggest gainers out of all of this. Uh, अगर देखा जाए, she's the one who is somehow, without any doubt, I have no clue why she's out, but she's out on bail. Uh, she's getting work. She's getting the screen space as well. She is also getting a lot of support from the mainstream Bollywood as well as media. She is doing a lot of things, which, as a uh, you could call her a conspirator or somebody who is still under investigation. She's getting a lot of work as well. ये वही है जिसके पास अपना रहने के लिए भी, she did not have rent, and now she is, when she is a conspirator, and when she is somebody who chappal chor, I like this word. Bus ho gaya, I know. We studied about justice. One second, let me just finish off this comment, because योगेश जी, इतने लोग प्रे कर रहे हैं, लोग जरूर होगा. एब्सोल्युटली, थैंक यू. प्रेयर्स फॉर यश. वरुण जी, इस आईडी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, फिर चंद बंद दोबारा ऑन कर लें, चैट बंद करके दोबारा ऑन कर ले. ओके, आई विल हैव टू सी इफ आई कैन डिसेबल चैट व्हाइल द लाइव इज गोइंग ऑन. वो मुझे नहीं पता कैसे होता है कि नहीं होता. Let me keep this on the screen. So thank you so much. Yes, this Chapal Chor uh, completely robbed her, completely robbed him of his, मैंने कल भी बोला था, of his fame, his money, his status, ev- even his caliber. Uh, she did not leave anything. She also conspired with so many people into making him, वो जो drinks के अंदर डाल के, whatever she did.
even the travel, जहाँ पर वो बाहर ट्रैवल करने गए थे, यूरोप ट्रिप एंड ऑल दैट स्टफ, वहाँ पर भी इस बंदी ने क्या किया क्या नहीं किया, इट्स समथिंग which is completely known either to her or maybe Sushant. And बहुत कुछ इस बंदी ने सुशांत के साथ ऐसा किया where he was not able to kind of have uh, a very very kind of a stable life. He could have, I think she's more than a chappal chor. Yeah, I'm sure Omkar ji, I am very sure कि इसका she will definitely repent her entire life. She will definitely not be spared. Karma doesn't leave anyone, and I'm sure she will definitely not be uh, left and spared. The second person, for me, of course, is Sandeep Singh, who was sent टू डू द क्लीन अप. ये कचरा साफ करने के लिए इस कचरे वाले को भेजा गया था कि वहां पर जो बाकी क्रिमिनल्स कचरा छोड़ गए अपना, जो भी वहां पर अपने प्रूफ्स और एविडेंसेस को किसी तरह वहां छोड़ आए, उसको साफ करने के लिए इस नलायक इस सांप को भेजा गया था, जिसने अपनी इतनी पुरानी दोस्ती, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, उसको भी सब कुछ भूल भाल के इसने अपने, ऑब्वियसली इसका कोई ज़मीर तो था ही नहीं, तो सब कुछ बेच बाच के, he is, for me, he's as much of a killer, as much of a criminal as anybody else who literally physically killed. कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी वहां पर हो. Anything is expected out of this सांप, जिसने खुद अपने ही दोस्त को डस के खत्म कर दिया, और बाद में उसकी पूरी वॉचअप करने के लिए he played his part, and he was definitely planted. Sure. Hello Mona ji. I think you should definitely get in touch with Preeti Pandey. I think she'll be able to do the needful, and we all can feed the needy there. So we'll definitely but I will ping you offline as well. So yes, so अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं संदीप सिंह को कान फिल्म फेस्टिवल एंड व्हाट नॉट, ही इज द सेंटर स्टेज बॉय, द पोस्टर बॉय बन के बैठे हुए प्रोड्यूसर. And I know you are Mona ji, so if you can, you should definitely check with her. And I'm also going to ping her tomorrow, actually tonight, to see if we can do something. So अगर मैं बल्कि सबको कहूँगा, अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं, feed the poor and the little kids, you should definitely get in touch with Preeti Pandey, because she has a NGO where there are a lot of young little kids, and even elderly ladies and men as well, and they could definitely take care. There are more than her foundation. Yep. But I don't trust anyone. That's the problem, Mona ji. I only trust Preeti Pandey and her NGO, so that's why I can say that. I have very very little trust on others. Uh, अरे काली राम का पूरा बोल. शिवाय एंडरसन, अरे काली राम का. तो इसका तो भैया ऐसा है कि Sandeep Singh, we've done some sessions on him, and maybe we'll do another revisit. But on a high level, we all know how this guy has uh, done certain things to make his visibility in this industry. और उसके बाद the way he has gone into the circles, and अपने दोस्त को नहीं छोड़ा जिसने, तो उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि और आज की डेट में ही इज एवरीवेयर प्रोड्यूसिंग द बिगेस्ट मूवीज. सो जैसे प्रियंका दी ने ये जो टैगलाइन दी है कि किस तरह से एसएसआर कॉन्स्पिरेटर्स आर रिवॉर्डेड, a person like Sandeep Singh, जिसके पास, again, coming from a very low family, uh, he is producing the biggest films possible, budgets of 50, 100 crores and more. How is he able to do that? So definitely he has been rewarded as well for doing a good job on 14th June.
covering up a lot of things, covering up a lot of plots, botching up a lot of evidences. I think he did his role, and for that he has also been rewarded. uh, बात करें दिपेश सावंत और some of those helpers, except for योगेश जी, आपने क्या बोला? It's powerful, never get caught, they can do anything and money is got there. डोंट वरी योगेश जी, पावरफुल तो अनिल देशमुख भी था, पावरफुल तो परमवीर सिंह भी था, पावरफुल तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं. पावर और मनी सब कुछ नहीं होता. राइट नाउ दे आर एंड इवन दैट मंत्री, राइट, चिचा जान को कैसे भूल जाए हम. नवाब मलिक ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस करी थी, एंड नाउ ही इज द वन हु इज behind the bars. We are the ones who are now laughing at him. He's become a laughing stock for the entire nation. So, like Varan saying, don't worry, Yogesh, we'll have the last laugh. Law of karma can never fail, and it will not fail. And don't worry about these CBI updates. Trust the family. Is all I can say. Family is not going to sit idle. They're not gonna. वो कहते हैं ना, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है. As much as I know about Priyanka, as much as I know about Meetu Di, trust me on one thing. मैंने ये पहले भी कहा है और मैं हर बार बोलूंगा. They will rip apart anyone, literally rip apart anyone. They are not gonna wait for 10s and 20 years के भाई justice के लिए. They will definitely get justice. They're here for the brother जिसको उन्होंने इतनी जब तब से पाया, जिसको इतने प्यार से बड़ा किया. The entire life they've spent around their brother, उसके लिए ये बहनें ये किसी को नहीं छोड़ेंगी. Trust me on that. They are not gonna make a fun. They will definitely uh, ensure that they get justice, and it's matter of time. She has already, Priyanka Di has already tweeted couple of times. She is taking people head on. She doesn't even care about these चिंडू मुड्डू वाले जो ट्रोलर्स होते हैं, उनको भी नहीं वो तो बख्शती. तो आप भूल जाओ कि वो ये क्रिमिनल्स को छोड़ेंगी. शी इज I personally, I think I've never said this, and I'm gonna say it tonight. She's a one woman army, if I could say that. She is headstrong. She will make sure, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो कोई भी हो जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, she will not leave anyone. And बाकी सुशांत की spiritual powers is gonna back all the sisters, all the warriors who are fighting for this justice. And um, even snakes are better. Yes, Mamta ji, absolutely. Um, you're right. And like I said, since it's going to be a quick session, I have just pinged the URL in case anybody wants. And Varan, I'm gonna tap on that as well. We should not put pressure on family. They're also humans and have life to live. Getting SSR is our justice for SSR is our job as well. And that's why I like people like Varan. I like people like Mamta ji. I like few more people who are actually here. Who let me just put it this way. जो मुझे रेगुलर डेली नहीं हर स्पेस पे दिखेंगे, हर सेशन पे नहीं दिखेंगे, but they know they're here for Sushant. There are others who I see almost like regularly. RS is there, Sonal, Judy, Paddy, and Shweta, Chitali, Ushma ji is there. When I see all these people, I know these people are going to continue the fight till the very end. They're not going to stop. Then there are a few people who I see, occasionally, and but I still know they will continue to fight till the very end. KD is there, Akashveer ji is here, Jill is here. I mean, this list is endless. There are many people like that. But those trollers and those
idiots who are poking the sisters, who are irritating the sisters, who are irritating the warriors by asking some very idiotic question. Are SSR warriors? Yes. Hello, hello, hello. Good to see you as well. Aj, I think I'm seeing so many amazing people. I think there is something about these 14 days, and I really cannot thank you enough. I really feel happy to see you as well, SSR warriors. Another channel. uh, Again, लोगों ने तो ये भी कहा था मेरा ही चैनल है भाई, मेरा चैनल नहीं है, but at least this is a channel run by someone who also stands for Sushant genuinely. uh, I'm always you know looking forward to such people. अभी मैं देख रहा हूँ कैरोलिन जी भी हैं, and there are many more, uh, especially on the SSR Warriors channel पे. uh, इनको भी बहुत अटैक होता है थ्रू यूट्यूब themselves. दे ट्राई टू कर्ब देयर वीडियोस, इनके वीडियोस भी डिलीट हो जाते हैं, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं. बट हैव दे स्टॉप्ड? नो, they will not stop. They will not stop at any cost. I will not stop at any cost. करने दो, जिसको जितना अटैक करना है कर ले, जिसको जितना झूठ बोलना है बोल ले, जिसने सुशांत की सिस्टर्स को भी अटैक करना है कर ले. ना उनको फर्क पड़ता है, ना हमें फर्क पड़ता है, और हम लोग ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे. बिकॉज एंड ऑफ द डे फॉर अस, सुशांत वॉज सच अ प्योर सोल. उसके साथ ये हुआ है, कल को ये किसी और के साथ भी आराम से हो सकता है. और इसी वजह से uh, हम लोग वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर सुशांत, और सुशांत जैसे लोगों के लिए. सो थैंक यू SSR वॉरियर्स, कीप रोरिंग नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी गेट अटैक्ड. जितनी बार मर्जी हमें हमारे चैनल्स पे वीडियोस उड़ा दिए जाएं, हमारे चैनल्स को जो भी करा जाए, एक चैनल जाएगा और चैनल बन जाएंगे. कौन सा मुश्किल है इस चीज में. सो वील कंटिन्यू टू डू दैट, एंड kudos to you. Keep the fight on. I am sure you don't need that kind of fire, because end of the day I know you will continue to do that, and so proud. I'd love to do a session on 14th, and if possible आप भी जरूर आए. बहुत अच्छा लगेगा हम सब लोग मिलके 14th को. Let's do another kind of I would call it a memorial for Sushant. Well, when we all can remember, 2 साल हो जाएंगे 14 तारीख को, and few of us, mostly a lot of us actually, we got a lot of, I would not say visibility, but हमारा जो थोड़ा बहुत लोग आके हमारे साथ connect हुए, it was all because of Sushant and this fight. So I think it makes all the more sense to come together, talk about Sushant, think what we have done in the past, also share some ideas for the future, and it would be an amazing experience. So thank you once again, SSR warriors, and both of you keep on roaring, keep on doing what you're doing, and I look forward to seeing you hopefully every day, क्योंकि हम रोज ही कर रहे हैं 14 दिन के लिए. But उसके साथ साथ if we can have you on the 14th as well, that'd be great. So yes, we'll continue this. और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग और भी थे जिनको चाहे वो दीपेश हो, चाहे वो नीरज द कुक, इन लोगों को कभी फरहान अख्तर के घर पे देखा जा रहा है, कभी इनको सारा अली खान के साथ काम करते हुए देखा जा रहा है. इट इज़ रियली रियली सैड टू सी दैट इवन बीइंग कॉन्स्पिरेटर्स. और ऐसा कौन सा होता है, to be very honest, if Cook hai, for example, and you were part of a murder, चलो अभी मर्डर इसको ना बोल के डेथ बोलते हैं, कि somebody died under mysterious circumstances and you were physically present there, you will be always seen with that doubt. ऐसा क्या है इन मूवी स्टार्स को, चाहे वो फरहान अख्तर, चाहे वो सारा अली खान, कि इनको इन लोगों को काम देना है. Why are they being supported? देखा जाए रिया चक्रवर्ती के साथ भी यही हो रहा है, कि अगर she is a co-conspirator या conspirator, why is she getting all the support and all the love
फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स होते हैं, चलो फ्रेंड्स का मान सकते हैं कि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही रहेंगे। कल को हमारे बीच में भी ऐसे ट्रोलर्स बैठे हैं जिन्होंने कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं और वो फ्रेंड्स अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट why all this work from outside? सेम दिपेश के लिए, नीरज कुक के लिए, इन लोगों को भी काम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? वाई आर दे नॉट यू नो इसी वजह से शायद ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, इसी वजह से शायद इन लोगों ने मुंह नहीं खोला, बिकॉज दे नो दे विल बी सपोर्टेड, दे विल बी फंडेड, नौकरी भी चलती रहेगी, काम भी मिलता रहेगा, लाइफ भी चलती रहेगी, सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू वरी एंड प्लस दे आर बैक्ड अप। So end of the day, all I'm saying is, they all continue to speak for or against, sorry, ये सारे लोग against सुशांत के इन्होंने काम किए, but they continue to get all the support from these people, which is very sad and ironic. And that's why I think one of the reasons why Priyanka Di might have given this tagline would be she also sees कि किस तरह से these guys have been rewarded, supported. We definitely will not leave anyone. We definitely won't leave anyone. We will continue to talk about against them. We really want to talk about what has happened. I really want to understand from the drama board that how on earth a person can spend on luxury more than their earnings. They should make a movie on this strategy. Bilkul Shweta, I the way they have done it, मैं खुद देख रहा हूँ ये रिया Chakrabarti, somebody who did not even have a 10 rupee note in her purse some time back, did not have enough money to pay for her rent for an apartment in Mumbai, is all of a sudden getting such lucrative offers and movies and appearances ke paise mil rahe hain. So she's, I'm not saying that anybody should not be given that kind of thing, but she is a conspirator in a murder case. So not even sure how and what is happening and why these are being supported. But end of the day, like I always say, and like a lot of people, मैंने सुना है ममता जी को, Judy को, a lot of people have firm belief uh, that karma will not leave, Sushant's spiritual powers will not leave them. And Carolyn, I have to acknowledge. I have to acknowledge. I think Lenora को मैंने पहले किया था. You are the second person, and I have no shame in acknowledging few things. Uh, you were right. I maybe was a little. I would call myself. I became a little partial. क्योंकि मुझे लगा था कि शायद हमें कम लोगों के बारे में बहुत बात करनी चाहिए. But you're absolutely right. We cannot trust any politician, we cannot trust any leader, we cannot trust अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी फिर दूं जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ. नाउ देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स. वन स्कूल ऑफ थॉट वो लोग हैं जो कहते हैं कि ही इज अ प्रो खालिस्तानी, वो खालिस्तानी का सपोर्टर है एंड व्हाट नॉट, एंड why is everybody supporting him, right? And then agar aisa hai, if this is what they feel and if this is what they think about Sidhu Moosewala, then what are our the leaders, right, from Prime Minister Modi to Amit Shah, what are they doing and supporting Sidhu Moosewala, his family, going to visit. और मैंने इसलिए भी ये सेशन किया था सिद्धू मूसेवाले वाला, जिसके अंदर बात हुई थी कि अगर इफ अमित शाह कैन गो एंड मीट Sidhu Moosewala's father, then why not go and meet सुशांत सिंह राजपूत's father? क्या सुशांत सिंह ने कंट्री के लिए कुछ नहीं किया? करोड़ों में पैसे दिए, डोनेट किए for the floods and the poor people. He was doing so much for our community, our society. Then why are these leaders not going and showing that support to Sushant's father? So that is one school of thought. The second is
ऑफ कोर्स अगर हम सिद्धू मूसेवाले का ही लेके चलें, कि अगर हम लेके चलें कि ही वाज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, वेरी टैलेंटेड सिंगर, who's done so much in the music and the entertainment world. The way he has been killed, दिन दहाड़े point blank range पे गोलियां मार के कोई चला जाए, and all we see right now is all the different political parties. मैं देख रहा था कि the prayer ceremony had people from all the different political parties. I don't know if they're going to take political mileage out of it. I don't know, but end of the day, they've come out and stayed. During that the entire prayer meeting. सुशांत ने ऐसा क्या किया कि इन लोगों को इतनी मौत पड़ गई कि सुशांत के लिए एक भी आके नहीं खड़ा हुआ? यहाँ पर भी कुछ लोग मैं देख रहा था, आई डोंट नो आज था या कल था, मैं ट्वीट्स कुछ देख रहा था. पीपल आर फील सुशांत वाज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन. अगेन रिलीजन तो आई थिंक हर जगह हर चीज में घुसा देते हैं लोग, विच इज वेरी 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 सैड टू सी. ऐसा नहीं होना चाहिए. But I personally, I don't believe in that, that he was killed or he was murdered because of his religion or whatever. Because end of the day, I don't think they killed him because he was a Hindu. That to me is a very idiotic statement to even make, and I will never support that. But end of the day, so Carolyn, anything is possible, and to your point, अगर हम थोड़ी देर के लिए अमित शाह को छोड़ते हैं, अमित शाह का जो बेटा है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट ही वाज सिटिंग विद अक्षय कुमार watching those IPL games. मुझे नहीं पता मैंने कौन सी गेम थी, because I don't see it, I haven't seen it, but there was one particular game, and if I'm not wrong, it was either the final or semi-final कहीं तो, and they were spending time as if they are the best of friends. ये वो अक्षय कुमार है जो आईएसआई एजेंट्स के साथ बैठ के लंचेस डिनर करता है, उनके साथ उनकी कार्स में घूमता है आउटसाइड ऑफ इंडिया. Somebody who doesn't even have Indian citizenship, hopefully अभी भी नहीं है इसके पास, and still our leaders and their kids have the audacity to sit with Akshay Kumar and have a great time. शाहरुख खान का हमने सीन देखा, his druggist kid जो ड्रग्स के केस में गया, he has been getting a lot of support from the current leadership in Delhi, जो बार बार ये जो छतरी के नीचे छुप के ये दिल्ली पहुंच रहा है और दिल्ली में जाके ये लीडर्स को मिल रहा है. What is all that nonsense going on? Are we so idiot? अगर हम इतने अब अंधे हो चुके हैं क्या कि हमें ये सब समझ नहीं आता? देर आर वो कहते हैं ना ब्लाइंड फॉलोअर्स, एंड वो अंधभक्त जिन्हें बोलते हैं, जो भी होता है. हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना बैश करने आए थे ना सपोर्ट करने आए थे. हम यहाँ सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए आए थे. बट लुकिंग एट ऑल दिस नॉनसेंस दैट्स हैपनिंग, डू दे थिंक वी आर लिटरली ब्लाइंडेड कि तुम लोग कुछ भी करोगे हमारे लिए वोट्स लेने के लिए, and we are just being made a fool every year. And then किसी ने एक इंटरव्यू में बोला था, अगेन विदाउट नेमिंग नेम्स, एक डिबेट थी और वहां पर बोला गया था कि बार बार घूम फिर के हर चीज को डिविएट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम ये रिलीजियस डिवाइड शुरू कर दिया है. आई थिंक and it has gone to such an extent that people are constantly busy in these issues कि कौन सा किस रिलीजन में क्या हो रहा है क्या नहीं, and they are being deviated from the real things. मेरे लिए पर्सनली मैं यहाँ पर इस कॉज में आया था सिर्फ सुशांत की इस जस्टिस के लिए. आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट कि कंट्री में क्या बाकी चीजें हो रही हैं, बिकॉज जहां पर वो सब शुरू होगा वहां पर फिर हो जाएंगी पॉलिटिकल फाइट्स, पॉलिटिकल ड्रामेस. यहाँ पर लोग ट्रोलर्स वैसे ही वेले बैठे रहते हैं, उनको तो मौका चाहिए होता है कि किस तरह से किसी टॉपिक को पकड़ें और किस तरह से किसी भी चैनल को या किसी इंडिविजुअल को हरास करें. सो अभी के लिए तो मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए द प्राइम फोकस इज सुशांत जस्टिस. बट व्हाट हैज दिस जस्टिस फाइट शोन मी और टॉट मी is to see things with that neutral perspective. मैं यहाँ पर ये बैठ के नहीं कर सकता अच्छा मेरे को लगता है कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी या ये वाला लीडर हमें करेगा.
हमने बिल्कुल क्लियर बोला, एनीबॉडी हु कैन गेट अस जस्टिस, एनीबॉडी हु कैन डू समथिंग फॉर अस फॉर दिस फाइट, we are going to support them irrespective of who that person is, what that party is. But हमने देखा है कि even after such a long time, 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कोई दूर दूर तक हमें साइन नहीं दिख रहा सुशांत की जस्टिस का. बट विल दैट स्टॉप अस? नो, एक्चुअली इट इज अ गुड थिंग कि काफी लोगों की आंखें, कान और मुंह सब कुछ खुल गए हैं, एंड विल कंटिन्यू टू फाइट एंड रेज आवर वॉइस एट द सेम टाइम. एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था, मैंने भी नोटा शुरू कर दिया था कि वी शुड ऑल डू नोटा. But at this point of time, I would say, look for the right candidates, look for the right people. uh, क्योंकि एक आनंद रघुनाथन ने बोला था एक, and I hope everybody knows him. He mentioned it कि योगी और मोदी के भरोसे नहीं चलेगी दुनिया. दिन के बदौलत ये पूरी कंट्री नहीं चलेगी. They will retire someday. The entire party needs to kind of do certain things. So end of the day, चाहे वो कोई भी हो, चाहे योगी हो, मोदी हो, गांधी हो, नेहरू हो, गुप्ता हो, कपूर हो, it doesn't really matter. These names, these titles, they really don't matter. It's in the end what matters is your sincerity towards your country, your sincerity towards your people. If somebody is able to do something for the country, if they are able to do something for the people, go support them. Do not do this. Exactly, Ruhiji. Absolutely. And this is my pain as well. हर जगह जहां जाओ, ट्विटर पे जाओ, कहीं जाओ, सिर्फ यही दिख रहा है मुझे. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कंट्री, आई थिंक वो बीच में जैसे मैं भी शुरू हुआ था, वी आर वेरी टॉलरेंट. यस, वी आर वेरी टॉलरेंट, एंड वी डोंट वी और शुड वी नॉट बी टॉलरेंट? आई मीन, शायद हमें थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ के अंदर किसने कहाँ क्या खाया, किसके साथ बैठे, अ, दैट उसमें भी हम रिलीजियस सब सेंटिमेंट्स घुसाएँगे. किसी ने किसी को सपोर्ट दे दिया किसी राइट चीज़ के लिए, वहाँ पर भी हम रिलीजन घुसाएँगे. ये हो क्या रहा है? इतना तो मैंने इतना डिबेट तो कभी भी नहीं सुना. और ये रिसेंटली जो मैंने सुनना शुरू किया कि सुशांत डाइड बिकॉज़ ही वाज़ अ हिंदू, इट्स अ अलग एक ही अलग लेवल का, मतलब इसमें सुशांत का हिंदुइज्म के साथ ये कनेक्शन कहाँ बना दिया भाई? तो थोड़ा तो रुको. Just be a little bit more sensible. Open your eyes, and don't just make stuff for the heck of it, and not even the courtesy, decency to acknowledge people fighting. Exactly. And this is the sad part, Ashnuji, and that's what I keep on talking. Even offline, I talk to a few people, and I've mentioned कि 2 साल, 21, almost 22 months, CBI क्या हो गया? CBI क्यों चुप है? लीडरशिप, क्या उनको नहीं दिख रहा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे सुशांत हैज बीन ट्रेंडिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? सुशांत एक नाम ऐसा ट्रेंड हो रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. Don't they take cognizance of this, and don't they have any kind of what do you call, responsibility to come out and talk about Sushant? Don't they have any kind of accountability to the father, to the family, जिनका बेटा इस तरह से in the prime of his age, in the prime of his career? और यहाँ मैं वो बात भी नहीं कर रहा somebody who is like a common man. मतलब मैं अपने जैसे लोगों की तो बात भी नहीं छेड़ सकता कि वो लोग कहाँ के कहाँ उनके साथ क्या हो जाता है और कब कहाँ किस तरह से किसी को मार के फेंक दिया जाता है, उसकी तो मैं स्टोरी भी नहीं अभी तो शुरू कर रहा. यहाँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेलिब्रिटी, somebody who was known globally. सिद्धू मूसेवाले के लिए मैं देख रहा था, देयर आर इंटरनेशनल स्टार्स who are doing those kind of tributes, and even on their live shows they are kind of doing that for Siddhu Moosewala. Sushant, to me Sushant was a bigger star. क्या हो गया? I heard from Judy कि सुमन जी went to one of the concerts, Arijit ke, and there was not even like a little respect or a regard for Sushant by even the singers. क्यों? क्या हो गया? सुशांत ने ऐसा क्या कर दिया अपनी कंट्री के लिए जिसकी वजह से आप उसको इतना
you don't want to acknowledge his presence. Um, मेरे हिसाब से तो उसने इन सब छपड़ियों से ज़्यादा डोनेट किया है पैसा, इन सब छपड़ियों से ज़्यादा कंट्री के लिए भी किया है, इंडिविजुअल्स के लिए भी किया है, एंड ही वाज हैविंग अ करियरिस्टिक अप्रोच, और उसको छोड़ दिया इन सब ने, ऐसे बॉलीवुड वालों ने. दैट इज लाइक शेमफुल, रियली वेरी शेमफुल. um, Anyways, I mean, all I can say right now is, we will continue to fight, we will continue to talk, we will not stop. And जैसे आज प्रियंका जी ने बोला, SSR कॉन्स्पिरेटर्स रिवॉर्डेड. इस स्ट्रीम, अगर इस टैगलाइन की एक लास्ट, अगर किसी इंडिविजुअल की मैं बात करूंगा, हालांकि 2 दिन पहले भी की थी, Ankita Lokhande, another example, prime example, somebody whose career was all gone, somebody whose only, क्या कहें, फेम का रीजन सुशांत था, whose career was completely dwindling, whose career was completely like finished. She is back in limelight, all thanks to all the lies that she said in front of Republic TV and other channels, things she said about Sushant after his death. यहाँ तक किस इंसान ने कह दिया था कि what, मैंने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था so that Sushant could be a bigger star. Shame on her that, उसके बाद this is what you do. Unfortunately, again, ऐसे लोगों को बहुत रिवॉर्ड मिला है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिला है, एंड दे कंटिन्यू टू गेट इट, कंटिन्यूसली दे आर गेटिंग इट. But फिर से on a ending note, I would say, let's continue to speak for Sushant. Let's continue to speak against these idiots, these criminals and these conspirators, जिन्होंने सिर्फ सुशांत को यूज ही नहीं किया, अब्यूज किया, and literally some of them are completely responsible in killing him, taking him away from us. And end of the day, karma will take its course. They will definitely be killed, if I have to say, or will be hanged. And let me get SSR warriors here. So happy to see her. Hello. कैसे हैं आप? हेलो. हाँ जी, कैन यू हेयर मी? यस वरुण जी. हाँ जी, कैसी हैं आप? नमस्कार. सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बहुत देर बाद आपको देखा यहाँ पर. जी, काफी टाइम से आपको सुन रही थी, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका. बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी लड़ाई में हम लोग भी आपके साथ हैं. बिल्कुल. और आप जो भी बातें बोल रहे थे सुशांत के बारे में, और जो लोग भी सुशांत के केस से जुड़े, तो आपने बिल्कुल सही कहा. जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सबकी चांदी ही चांदी हो गई. मतलब सबकी लाइफ इतनी बदल गई है, चाहे वो रिया हो, अंकिता हो, संदीप हो, कोई भी हो. बिल्कुल. तो आखिर जो काफी बड़े लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा गैंग है जिस तक, मतलब मेन आदमी तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे. यप, बिल्कुल. और ये जो अक्षय कुमार जी मूवी लेकर आते हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि अब हिस्ट्री की मूवीज लाएंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे. वो लोग पॉलिटिशियंस को ले आएंगे और सोचेंगे कि मोदी जी ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया, तो फिर पब्लिक सपोर्ट करने नहीं जा रही. जो ये लोगों ने कांड किया है ना, कोई भी मूवी बनाएंगे. कश्मीर फाइल्स अलग चीज थी, लोगों ने सपोर्ट कर दिया, अब सपोर्ट मिलने नहीं जा रही है. बिल्कुल सही. और जैसे सबसे जो बुरा लगता है वो ये लगता है कि हमारे ये जो लीडर्स, जिनके ऊपर इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने एक ट्रस्ट फैक्टर रखा, वो आज की डेट में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं. मैं देख रहा था किस तरह से अक्षय कुमार हाथ जोड़ के इनके पीछे आसपास मंडरा रहे हैं, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो लीडर्स के बच्चों के साथ बैठ के क्रिकेट गेम्स हों. हर जगह ये बस उनके पैरों में पड़े हैं कि किसी तरह वहां से सपोर्ट मिलती रहे. और सैड पार्ट कि वो इतना सपोर्ट दे रहे हैं, टैक्स फ्री कर देना मूवीज, प्रमोट करना. ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, इतने सालों में ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई किसी भी मूवी को लेके इतने बड़े बड़े लीडर्स एक प्रमोशन, मैं तो प्रमोशन ही कहूंगा कि प्रमोशन सेरेमनीज में अटेंड कर रहे हैं. मैंने नहीं देखा था ये पॉलिटिकल सिनेरियो के पॉलिटिशियंस को ये भी काम करने पड़ते हैं.
ये कुछ ये नया लोग ही है। सोच रहे हैं कि बस मतलब हिंदुओं की पिक्चर बनी है, हमारी हिस्ट्री की पिक्चर बनी है तो उसको सपोर्ट करना है। अब ये लोग बदल गए हैं, अब ये लोग ऐसी मूवीज बनाना चाह रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, कोई नहीं बदला है, बिल्कुल, सबको पैसे चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। और नहीं, आपने आपके मैं वंस इन अ व्हाइल वीडियोज़ भी देखता हूँ, पर आपके बारे में बहुत सारे लोग रेफ़रेंस एक हमारी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है हमारी भी एक एक फैमिली में गिरिजा जी। वो आपके वीडियोज़ के लिंक्स कई बार भेजती हैं और कहती हैं कि हाँ, ये देखो ये सही कह रही है, ये सही इंटरप्रिटेशन है। तो और वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, बट आप जो कर रहे हैं डेफ़िनेटली आपको भी उसका हर्जाना भरना पड़ता है। कई बार मैंने सुना है, कई बार मैंने देखा है, आपके साथ भी वीडियोज़ के साथ बहुत झोल करते हैं ये लोग और हमारे भी वीडियोज़ उड़ा देते हैं, कभी कुछ हम ज़्यादा जी बोल जाएँ या कर दें। तो ये तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते, बट कुडोज़ टू यू। मुझे आज भी याद है 2 साल पहले, अब तो हम देखा जाए तो गिने-चुने कुछ ही बचे हैं जो जी। हम शुरुआत से उस टाइम पे हमने थोड़ी बहुत बात भी की थी और हम देखते थे एक-दूसरे का किस तरह से हम क्या कर रहे हैं। बट बट आपसे आज बहुत इंस्पिरेशन मिलता है वरुण जी। नहीं, नहीं आपसे जितना सबको लगातार आप लोग लगे हुए हो, अ, उतना बहुत मुश्किल है किसी के लिए करना। मतलब जो भी अभी एसएसआर वॉरियर्स जो लोग भी लगे हुए हैं, कंटिन्यू चल रहा है और मतलब जरा भी कहीं से हम लोग को लग नहीं रहा है कि कुछ जस्टिस का कुछ भी पता नहीं है, बट फिर भी हम लोग लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना ये लगातार अगर किसी चीज के लिए कोई लगा रहेगा तो हो नहीं सकता है कि ना मिले। ना मिले। एग्ज़ैक्टली नहीं, हम तो अपना कर्म कर सकते हैं, राइट? कर्म की करो और फल की इच्छा मत करो, पर हम तो फल की इच्छा थोड़ी तो रख ही रहे हैं फिर भी, क्योंकि हमें इंसान उम्मीद है है। ना। हाँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नहीं, जी बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली और आप भी करते रहें। वही मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा था जैसे कि 14 तारीख को हम फिर से कुछ करेंगे ऑब्वियसली वील डेफिनिटली रोर अगेन। आप उस दिन भी ज़रूर आएँ। वील लव टू टॉक, वील लव टू बल्कि उस दिन तो आप आके हमें बताएँ पूरा का पूरा कि किस तरह से आपने ये 2 साल में you've seen it all। हमने सबने मिलके बहुत कुछ देखा है, अप्स, डाउन्स, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स एंड लेट्स काइंड ऑफ उसके बारे में सारा दोबारा बात करें और जी लेट्स लेट्स इंस्टिल दैट फायर, क्योंकि अभी आज की डेट में एक वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है लोगों को अनफॉर्च्युनेटली थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर लगने लग गया है अब ये एक एंटरटेनमेंट की तरह बस देखो, टाइम पास करो और चलो मूव ऑन, कुछ नहीं होने वाला। ये बन गई है लोगों की एक सोच। उस सोच से हमें लोगों को कुछ तो बाहर लाना पड़ेगा कि ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा यहाँ पर, यहाँ दिस इज़ सीरियस fight for justice. Looking at how Priyanka Di and the entire family is fighting, it's not easy, जी हम में से भगवान करे किसी को भी ये ऐसा कुछ ना देखना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ बीतेगा तो आई डोंट थिंक हमारे लिए आसान होगा। सो मोर पावर टू देम, बट लेट्स डू इट मोर ऑन 14। एक बार फिर से जी करेंगे। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा वरुण जी बहुत आपसे अच्छा बात लगा करके। मुझे भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच जी। ऑलराइट आयुष, प्लीज गो अहेड, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। आपको ये और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रियंका दी और बाकी जो मीतू दी ये सब कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के घर में उन्हीं के भाई क्या कर रहे हैं? इन पॉलिटिशियंस के साथ, इन बॉलीवुड के साथ उठ बैठ रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं? एक तरफ आप जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना। अगर आपको बदलना है तो पूरा बदलिए, आप अपने फैमिली के साथ खड़े होइए। और इन बॉलीवुड वालों का क्या है कहना, ये मौका परस्ती लोग हैं, जिधर मौका बनता है उधर ही लुढ़क जाते हैं लोग। 2000 अब इनके अंदर देशभक्ति जाग रहा है। जरा इनके फोटोज जरा दिखाया जाए सबको, कहाँ कहाँ किन किन के साथ उठना बैठना है। बिल्कुल। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जिनकी जिनकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस अपनी जान गंवा बैठती। आज एंड तक इतने शहीद हुए लोग हैं आर्मी ऑफिसर, एक बार भी ये लोग नहीं गए, लेकिन उस पर फिल्म बनाएंगे जरूर। इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अरे फोटोज खिंचवाने जाते हैं, राइट? फोटोज खिंचवाने हम्म। जाएंगे लोगों के बॉर्डर के पास तो नहीं जाते, बट ऐसी ऐसी जगह पे जहां पर अच्छी फोटोज निकले
एंड एक्चुअल में जब कुछ होता है तो इनके सांप सूख जाता है। बिल्कुल। और ये लोग एसएसआर से कंपेयर करेंगे अपने वो, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है एसएसआर के लोग। आई नो। एसएसआर जो कर गए वो इनमें वो इतनी काबिलियत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सो नहीं, एब्सोल्युटली। और आज मुझे वैसे भी अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं चैट में भी देख रहा था, कुछ नए नाम, और आज एसएसआर वॉरियर्स आप भी यहाँ आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग। और एसएसआर वॉरियर्स के लिए तो मैं सिर्फ वही एक बार फिर रिपीट करूंगा, शुरुआत से मैं देख रहा हूँ हम लोग जब से शुरू हुए हैं, वो अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम से आई बीन वाचिंग। ये तब से हमारे साथ कई बार मैंने इनके साथ वैसे भी एक दो बार उस टाइम पे इंटरेक्ट किया था, बिकॉज एंड ऑफ द डे उस टाइम पे कुछ और ही सिनारियो था। बट उसके बाद भी वो दिन है और आज का दिन है, दे आर कंटिन्यूसली टॉकिंग। उस टाइम पे तो वी डिडंट इवन हैव अ फेस फॉर फॉर देम, क्योंकि इन्होंने एक बार बताया था मुझे कि देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से। बट आई एम सो ग्लैड एट लीस्ट नाउ वी नो एट लीस्ट देयर इज अ फेस। बट वो फायर हैज नॉट fizzled. So more power to them, more power to the very few people left now जो सोशल मीडिया या डिजिटली भी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। एंड चाहे वो ट्रोलर्स आए ना आए, करें जो मर्जी करे, झूठ बोले, और क्योंकि ऑलमोस्ट एट द एंड हूँ तो मैं ज़रूर ये बोलूँगा, जो मुझे लोग बहुत कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो इसके ऊपर बात करो, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, क्योंकि 14 जून मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लोग आज की डेट में इतना ज़्यादा लो जा चुके हैं, दे आर रीचिंग आउट। जो जो कुछ लोग मेरे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, कुछ ज़्यादातर मैं लोगों को पास आने नहीं देता, ज़्यादा मैं क्लोज नहीं होता, पर जो मेरे थोड़ा क्लोज ज़्यादा हैं, ये इवन उनको अब रीच आउट कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि आपको भी ट्रोल किया जाता है, आपके अगेंस्ट भी बोला जाता है। और वो मेरे लोग जो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जिनके साथ मेरा एक अलग ही रिलेशन है, वो और मैं मिलके अब हंस रहे हैं कि ये देखो ये किस लेवल तक गिर चुके हैं लोग। आई एम श्योर ये भी वो लोग सुनेंगे और उसके बाद वो और इसके बाद बढ़ाएंगे। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा कंटेंट तो मिले। 4-5 दिन और उनको कंटेंट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद शायद हम थोड़ा-सा शायद बोल पाएँ ओपनली, पर 4 दिन और आपको दिए और उसके साथ कंटेंट भी मैं देता हूँ आपको। जाओ, बोलो, जो करना है और लोगों को भेजो, और वो जो 3, 4, 6 लोग जो और हैं, उनको भी लोगों के डीएम्स में भेजो। एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप कोई बड़े हैंडल को इन्फ्लुएंस कर पाओगे या किसी छोटे हैंडल को इन्फ्लुएंस कर पाओगे या किसी और तरह से आप टारगेट कर सकते हो, आई गिव यू द एंटायर फ्रीडम टू डू इट। गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगर आपको लगता है कि आप कोई जज हैं या आप यहाँ पर सबको जज करने वाले हैं कि कौन क्या करेगा, किसके प्लेटफॉर्म पे कौन आएगा, कौन किसको इंटरव्यू करेगा या कौन किसके साथ किस तरह डील करेगा, तो आई एम टेलिंग यू, मेरे लिए तो भैया आप कोई जज हो नहीं। मैंने किसी से तो बात की थी आज, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इतना बात करना चाहते हैं कि इज एवरीथिंग ओके एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी बकवास चल रही है ऑफलाइन। तो मैंने उनको भी ये बोला था कि देयर आर ओनली टू थिंग्स और टू पीपल हु मैटर। एक, मेरे पेरेंट्स, इफ दे आस्क मी अ क्वेश्चन दे आर द वंस हु कैन जज मी, दे आर द वंस। तो मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली में से कोई मेरे साथ बात कर सकता है, पूछ सकता है, दे कैन क्वेश्चन मी। Second, around this particular movement, the only person who has any kind of accountability to even ask me a question or challenge me is Sushant's immediate family. That's it. इन दो के अलावा मेरे से आके कोई कुछ नहीं पूछ सकता, किसी को मैं हक नहीं देता, किसी के पास हक है भी नहीं that they can ask me a question and I have the full rights to even not give an answer to anybody. तो अगर आपको लगता है कि आप ये ड्रामा करके या ये बकवास ट्रोलिंग करके यू कैन, अगर आप मेरे को इरिटेट भी नहीं कर सकते, अभी आप मुझे तंग भी नहीं कर रहे, एंड आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बिकॉज ये जो स्पेसेस हो रही हैं फॉर द लास्ट 10 days,
इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और बहुत सारे लोगों को वो मिल रही है पॉजिटिविटी, बिकॉज हम लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक एक वो अफेक्शन और वो एक फायर से हम उस उन स्पेसेस को कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। इट्स नॉट माय स्पेसेस, हम सबकी जो स्पेस चल रही है। कल भी सतीश जी की है, मेरी कल, आपकी रात को सतीश जी की स्पेस होगी, जहां पर हम फिर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, उसके बाद दे विल बी मोर पीपल। अभिषेक की एक स्पेस होगी, देयर विल बी चटाली, देयर विल बी होपफुली श्वेता, दिनेश, दीपाली, इनमें से जो भी अगली अगली स्पेसेस करेंगे, इन सब की स्पेसेस विल ऑल बी वेरी पॉजिटिव, विल बी वेरी फोकस्ड अराउंड जंतर मंतर, बिकॉज मिशन जंतर मंतर इज द टॉप ऑफ आवर माइंड। फॉर ऑल द अदर ट्रोलर्स, यू डोंट हैव टू प्रूव कि आप इस मूवमेंट में कुछ कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग अपना डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं कि मैंने ये किया इस मूवमेंट के लिए, मैंने ये किया। किसी को कुछ नहीं चाहिए, यू नो, नोबडी नीड्स अ प्रूफ, नोबडी नीड्स अ वैलिडेशन। तो आप अगर वो डेटा इकट्ठा भी कर रहे हो ना, कर लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो ऑफलाइन कर रहे हो वो उसको नेगेट कर रहा है। जो आप लोगों के डीएम्स और व्हाट्सएप में जाके बकवास कर रहे हो, वो आपके उस करे हुए काम का भी, it is putting you to shame, and putting your little bit of effort जो आप थोड़ा बहुत करो उसको भी to the shame, and everybody ये जो ढोल धमाका करते हो ना आप लोग कि भाई most of the people were they saying this, most of the people, वो most कुछ नहीं है, वो 4-5 लोग हैं आपके, और आप आपस में खेलते रहो, you know। आप तो एक क्रिकेट टीम भी नहीं खड़ी कर सकते, मैं तो ये आपको बोलता हूँ। So whatever you want to do it, you know, on your own level। और लोगों को भीख मांगना बंद कर दो, ये भी मैं एक चीज कहूंगा, लोगों के सामने भीख मांगना बंद कर दो कि मेरे सेशन पे आओ, मेरे स्पेसेस में आओ, मेरी तुम स्पेस करो या वो स्पेस करो, सेम टाइम पे करो। ये सब जो चीजें चल रही हैं, अगर आपको लगता है कि हमें नहीं पता चल रहा, यूर सैडली मिस्टेकन। बट मैं उस पर भी कहता हूँ, गो हैड, आप सेम टाइम पे करो, सेम टाइम से स्पेसेस करो। हमारे लिए वो और भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोग सुशांत के बारे में बात करेंगे। सो वी वोंट बी रैटल्ड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें अच्छा लगेगा और करो। मैं तो कहता हूँ लाइव का मेरा ऑलमोस्ट फिक्स टाइम है, इस टाइम पे लाइव भी करो यूट्यूब पे, स्पेसेस का भी टाइम ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, उस टाइम पे स्पेसेस भी करो पैरेलली। इट रियली डजंट मैटर। और लोगों को जो भीख मांग के आप बुला रहे हो कि आओ आओ मेरे स्पेस पे आओ या मेरे सेशन पे आओ, आप वो भी करते रहो, हमें उससे भी नहीं फर्क पड़ता। सो एनीवेज, यस योगेश, आप जब मर्जी आए, यू नो, अभी के लिए तो 1 घंटा हो गया। इफ यू वांट फेट इनजस्टिस, आई नो आपको और बहुत लोगों को सिस्टम के साथ बहुत क्वेश्चंस हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। End of the day, this is something which is not in our hand. Next time elections आएंगे, आपके पास पावर है, आपकी, just use it wisely is all I can say. And next time, Yogesh, you know, at this point of time, I definitely have to end this session. कल if you want to come, आप जल्दी आए, मैं आपको पहले ही कल URL दे दूंगा। I would love to have any kind of healthy debate, discussion, even you know, listen to your points, and you know, see what I have। तो कल हम आराम से बात करेंगे। बट जाते जाते आयुष, कुछ और कहना चाहोगे आप? या लास्ट में वन थिंग कहूंगा कि इस तरह से जो कर रहे हैं लोग, जैसे आप कर रहे हो ना कि शिद्दत से लगे हुए, इसीलिए लोग आके पीछे आ रहे हैं। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं, व्यूज पाने के लिए। इनकी हालत तो पाकिस्तान के गिरी हुए जीडीपी जैसी है, भीख मांग मांग के अपना चला रहे हैं। दोनों जगह भीख मांग रहे हैं, एक वो आईएमएफ में जाके भीख मांग रहा है, दूसरा कंटेंट के पीछे भाग रहा है। तो ऐसा नहीं चलता, मेहनत थोड़ी होनी चाहिए, नजरिया होना चाहिए। या बिल्कुल। और आज को जाते जाते कोई लाइन नहीं बोलोगे आप? कोई अच्छी लाइन बोलो यार। देखता हूँ। ओके, ऑलराइट। सो गाइस, एक चीज जो मैं वैसे तो कल शेयर करना चाहता था, यू नो, और मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग, यू नो, इफ पॉसिबल, अपने अपने लेवल पे जो करना चाहते हैं करें, बट एट द सेम टाइम
14 तारीख को, इफ यू आर इन एंड अराउंड दिल्ली, मिशन जंतर मंतर, डोंट फॉरगेट। आप लोग इफ पॉसिबल खुद नहीं आ सकते तो प्लीज मेक श्योर यू सेंड समवन टू दिल्ली। जंतर मंतर पे 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। It would be really, really good to see more people join, at Jantar Mantar with the family, stand strong. And जाते जाते आप सबके लिए बिफोर आयुष कुछ बोले, हाँ, तो आपको मैं अगर लाइन है तो बोलो, मन हाँ बोलो। हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जान होती है, बिल्कुल। बहुत सही लाइन, बहुत सही लाइन। Here you go. थैंक Little something जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Any idea how many joining? अभी कोई काउंट नहीं है डेटा प्रो, बट we'll see. All right, this is something, a little hint कह लो, या a little prayer। हम लोग होप कर रहे हैं कि this becomes possible, but a little something for all of you. So we'll talk about it and many more things for the 14th. Till then, please keep roaring for Sushant. Let's continue this fight for justice, and let's keep on supporting the family till till we all get justice for Sushant Singh Rajput. Jai Hind, Jai Bharat, and I'll see you guys very soon. Take care. Bye bye.